अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। बेटा लास्ट टाइम हमने कहाँ पे खत्म किया था, कहाँ तक पढ़ लिया था, कोई याद है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओहम्स लॉ था। यहाँ तक कर लिया था या चलें? हाँ जी, तो last time we see the Ohm's law, and Ohm's law is actually the relation between the three variables, electrical variables like voltage, current, and resistance. And we find the Ohm's law is defined as the current passing through any wire will be directly proportional to the applied voltage and inversely proportional to the resistance. So we determine the expression that V is equal to IR. Then we see the Ohm's law triangle. From the Ohm's law triangle, we can determine the three quantities like this. This is the Ohm's triangle. There's a V, I, and R. So from the first triangle, we see that V is equal to I cross R. In the second triangle, we see that I is equal to V by R. And in the third triangle, we see that R is equal to V by I. So these relations shows what? These relations actually shows that if you know any two of the variables, you can find the third variable also. Then we see that if we have I is equal to V by R, so from here we see that if the resistance is kept constant, then what happened? If the resistance is kept constant, we see that when the applied voltage is increased, the corresponding current will also increase. And when the applied voltage is decreased, the corresponding current will also decrease. And in the second expression, we also see that if R is kept constant, then what happened? If R is kept constant, then we see that, if V is kept constant, we see that I is inversely proportional to R. It means if R is increased, the current will decrease. And if R is decreased, current will increase. So this is Ohm's law. Then we see the graphical representation. The graphical representation, this is also called IV characteristic. What is meant by the IV characteristic? IV characteristic means the graph between voltage and current is known as the IV characteristic. So we see that what is the graphical relation? As we see earlier, the current and voltage, these are both directly proportional to each other. It means if the voltage is increased, then the corresponding current will also increase. If this increase in voltage, range of this increase in voltage is constant, then the current is also constant. So here we see that if we draw the graph between current and voltage, then we get a straight line. What the straight line actually represent? The straight line actually represent the wire or the resistor in which the current is flowing is the linear resistance, because the shape of the line is linear. So one thing, another thing, we can determine the resistance of the wire from this graph. Resistance can be determined by taking the slope of the wire. And what is meant by the slope? Slope is defined as the variation along y-axis to variation along x-axis. So we can find the current. So current can be written as 1 over R equal to I over V. So from here we can find the voltage. Voltage is written as V is equal to IR. So this straight line actually determine the resistance of the wire. Now from here, we can say that we have the two types of resistors. One is called the linear and other is called the non-linear resistors. By linear resistors mean
the resistor in which the current totally depend upon the applied voltage. Whereas in the non-linear resistance, the current not only depend upon the applied resistance, but also depend upon the other factors also, like temperature, heating, this and that. So in the case of the linear resistor, the IV characteristic, it will be a straight line. It means that there is a direct proportionality between the current and voltage. Now for the non-linear resistor, the graph between current and voltage will be not a straight line. It means the voltage and the current values vary depending upon the other factors like temperature and light, but they may not be linear. So tungsten filament is the one of the example of the non-linear resistors. Like you also know that the material like semiconductors also give the non-linear resistors. So can you tell me any one of the example of the linear resistors? Hello? Electric bulb. No, इलेक्ट्रिक बल्ब तो लीनियर नहीं होंगे Tube. क्योंकि इलेक्ट्रिक बल्ब में आप व्हाट यू सी इलेक्ट्रिक बल्ब में आप देखते हैं कि कुछ देर के बाद वो आपका बल्ब जो है वो गर्म हो जाता है, हीट अप हो जाता है, इसलिए उसके अंदर जो आपका फिलामेंट है वो हीट अप हो जाए. तो ओम लॉ के लिए जरूरी है कि द टेम्परेचर ऑफ द फिलामेंट और द रेजिस्टर शुड नॉट चेंज नहीं होना चाहिए, लेकिन उसमें तो चेंज होगा. इलेक्ट्रिक बल्ब इज not a linear resistor, it is non-linear resistor. Tube light. Fluorescent bulb, sir. The Sir, tube light. fluorescent bulb या fluorescent tube lights. This is an example of the linear resistors. क्योंकि fluorescent में what you observe कि the temperature of the tube or the bulb doesn't change, whereas in the tungsten filament the temperature changes, so it is the non-linear. So what will be the graphical relation between the current and voltage for the non-linear? The graphical relation will be not a straight line, it will be like a graph like this. And you see that, what is this graph? This graph actually represents the relation between current and voltage for the semiconductor materials. In the semiconductor material, what you observe, initially, आपने पढ़ा होगा कि in the semiconductor material, initially the graph will be a curve, whereas at some point the graph will be a straight line. It means there is direct variation. So semiconductor materials like silicon or germanium are the non-linear resistors. So ये अब तक आपने ओम्स लॉ देख लिया. Now we see, here are the some of the examples, simple examples. और ये examples यकीनन आप के लिए थोड़ा सा concept develop कर देंगे कि what is the relation between current and voltage. In the first example, we see that we have to determine the current when the resistance is 10 ohm and the applied voltage is 5 volt. So here we consider the two different voltages, 5 volt and the 20 volt. अभी आपने पीछे देखा है कि current और अगर resistance constant है तो then the current and voltage they are directly proportional to each other. It means if the applied voltage increases, the corresponding current will also increase. So what you observe here, we see here the current is 0.5 ampere when the applied voltage is 5 volt, and the current is 2 ampere when the applied voltage is 20 volt. Similarly, this is another one. Now we see the second equation. The second equation is the V is equal to IR. So from here, you can determine the voltage if the current and the resistor both are known. Here the current is 2 ampere and the resistance is 100 ohm. So when both are known, you can find the applied voltage. In the third one,
you will ask to determine the resistance. Here, the resistance is defined equal to V over I. And here the applied voltage and the current both are given. So then you can say that the resistance is, you can find the resistance. All right. Yes, sir. This is a simple example. Calculate the current in milliampere for the following circuit. Here, the two parameters are given. One is the resistance and other is the applied voltage. And you know that how you can determine the applied voltage, so you can determine the current. The current is determined as V over R. So here, V is the 50 volt, R is the 1 kilo ohm. So in this way, you can determine the current. Then, how much voltage is required to produce a 5 ampere of current? It means here the resistance and current is given, so you have to determine the applied voltage. And what you see here in this circuit and in above circuit, what is the direction of current? Anti-clockwise. These are anti-clockwise. It means the current is going from the negative terminal to the positive terminal. So which type of current it is? Electronic current. Is that electric or electronic current you can say. और अगर आपका current जो है that is going from positive to negative, that is known as the conventional current. But one thing must be remembered, the conventional current is the virtual current. लेकिन हम इसको conventional इसलिए adopt करते हैं जिसना you know that the things always move from the high level to the low level. अगर आपके पास एक higher voltage level है, एक lower voltage level है, तो current will flow from the charges will flow from the higher voltage level to the lower voltage level. So whenever you draw a circuit, always mention the current from the positive to negative. Remember this one. Now, how much voltage measured across the resistor in the following figure? आपने बताना है कि resistor के across कितनी voltage आपकी होगी if the 5 milliampere current is flowing. One thing here, if you look this diagram, from this diagram we see that the battery, mean the source voltage, the resistance, and the voltmeter all are connected in parallel. So it means कि resistance के across आपका जो voltage होगा वही आपका voltage जो है वो voltmeter measure करेगा और वही voltage आपकी बैटरी में होगी क्योंकि अगर number of components आपके पैरेलल में लगे होंगे तो फिर सारे के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज जो है दैट विल बी द सेम एज there is a 5 milliampere current and a 56 ohm volt resistance. So when you multiply 5 into 56, that will provide you the voltage. So this voltage is indicated on the voltmeter. It means कि जो voltmeter पे आपकी reading note हो रही है वही voltage जो है that is of the battery. The next, we have the cells. We have the various types of cells. Here we consider the DC cells in which the chemical energy is changed into the electrical energy. So now we see that how the cells can be arranged in different ways. Cells हैं क्या? Cells generate the electricity and also drive the when it will generate the electricity, it will generate the electricity due to the chemical reaction. So it is also known as electrochemical cells, or the batteries are also the example of the
cells. अब देखें घरों में आपने जिन लोगों के पास यूपीएस लगे हुए उनके यहाँ बैटरीज लगी हुई हैं. उस बैटरी में there are number of cells depending upon how much current you need. आपको कितना करंट जो है वो रिक्वायर होगा. अब किसी भी सेल के अंदर हमारे पास दो टर्मिनल्स हैं या बैटरी के अंदर आपके पास दो टर्मिनल्स हैं. वन ऑफ द टर्मिनल इज नोन एज द एनोड एंड अदर इज नोन एज द कैथोड. मसलन बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है दैट इज कंसिडर्ड एज द एनोड और बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है दैट इज कंसिडर्ड एज द कैथोड कहलाएगा. और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात करें तो देन इन द एनोड द सेल द करंट विल एंटर फ्रॉम द एनोड और कैथोड में करंट आपका लीव करता है. ठीक है जी. अब देखें हाउ वी कैन अरेंज दी सेल्स. दो बातें, या तो आप वोल्टेज बढ़ाना चाहते हैं या आप करंट बढ़ाना चाहते हैं. आप मुझे ये बताओ कि आपने घरों में जो बैटरी यूपीएस के साथ लगी हुई है वो किस चीज को इंक्रीज कर रही हैं? वोल्टेज को इंक्रीज कर रही हैं या करंट को इंक्रीज कर रही हैं? You use the UPS in your homes and there are batteries connected there. बैटरी क्या चीज इंक्रीज करेगी? वोल्टेज इंक्रीज करेगी या करंट इंक्रीज करेगी? करंट. जी करंट. सही बोल रहे. करंट या वोल्टेज? करंट सर. करंट. वोल्टेज. को क्यों इंक्रीज करना चाहते हैं? व्हाट इज द रीजन? सर अपनी अप्लायंसेस को चलाने के लिए. अपनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को चलाने के लिए. क्यों? कि हमारी जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है उनके अंदर या आप घरों में आपका जो मेन स्विच बोर्ड है उसमें देखेंगे देयर आर द फ्यूज लगे हुए हैं और वो फ्यूज जो है वो 10 एम्पियर से 20 एम्पियर तक के होते हैं. ठीक है. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका एक पर्टिकुलर करंट आ रहा होगा तो वो आपकी अप्लायंसेस जो है वो ऑपरेट करेंगी. तो इट मीन घरों में आप जो बैटरीज लगा रहे हैं उनकी मदद से आप करंट इंक्रीज करते हैं. नाउ द क्वेश्चन, हाउ द करंट इज इंक्रीज्ड. जाहिर है बैटरी के अंदर आप बाजार में जब बैटरी जाते हैं तो आप कहते हैं जी इसमें इतने सेल्स हों. जाहिर नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा होंगे तो करंट ज्यादा होगा. नंबर ऑफ सेल्स कम होंगे तो करंट कम होगा. लेकिन you want to maintain the voltage, you want to keep the voltage there constant. आप तो वोल्टेज को कांस्टेंट रखना चाहते हैं. अभी आपने ऊपर रेजिस्टर्स की सूरत में देखा कि रेजिस्टर्स को हम दो तरीकों से प्लेस करते हैं या वैसे भी आप जानते हैं कि दो तरीकों से हम लगाएंगे. या तो सीरीज में लगते हैं या पैरेलल में लगते हैं. आप मुझे ये बताएं फ्रॉम योर प्री रिक्विजिट नॉलेज कि अगर रेजिस्टर सीरीज में लगेंगे तो कौन सी चीज जो है वो इंक्रीज करेगी? करंट इंक्रीज करेगी या वोल्टेज इंक्रीज करेगी? और वोल्टेज. वोल्टेज. और अगर पैरेलल में लगेगा तो करंट. ठीक है. तो इस तरह से सेल्स को आप दो डिफरेंट अरेंजमेंट वी हैव द टू ओहो. टाइप्स दैट इज ये नेट ऑन वाला बैलेंस आएगा तो उड़ नहीं जाएगा. नेट ऑफ करके लाना पड़ेगा. एक बार जान दे पहला खत्म होने देना. कितना पैरेलल कनेक्शंस. एक बार 150 एमबी है इन पे. नहीं उनको करा लेना दे. We have the series connection or the parallel connections. In the series connection में what you see in the series connection में we can say that the one end of the cell is joined with the other end like this. This is, it means the negative terminal of battery is or the cell is connected with the positive terminal and again the negative is connected with the positive. So
दिस इज द सीरीज अरेंजमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप सेल्स को एंड टू एंड ज्वाइन करेंगे तो उस सूरत में आपकी ये सीरीज अरेंजमेंट होगी। और वन थिंग मस्ट बी रिमेंबर, इन द सीरीज अरेंजमेंट द करंट रिमेन सेम। इसका मतलब आपका करंट जो है वो सर्टेन वैल्यू से एक्सीड नहीं करेगा। लेकिन जब आप सेल्स को सीरीज में प्लेस करते हो तो देन द वोल्टेज विल इंक्रीज। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास ये 3 सेल्स हैं 2 वोल्ट ईच, तो आपके पास जो टोटल पोटेंशियल बनेगा या पोटेंशियल डिफरेंस आएगा इन सेल्स का, दैट विल बी अप 6 वोल्ट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब आप सेल्स को सीरीज में प्लेस करते हो तो then the voltage will increase but the current remain constant like this. So other thing, जब आप सेल्स को सीरीज में प्लेस करते हैं, एक तो बात हमने की कि इसकी रिजल्टेंट ईएमएफ या रिजल्टेंट वोल्टेज जो है वो इंक्रीज करेगी। द अदर थिंग कि जब आप सेल्स को पैरेलल में प्लेस करते, सॉरी सीरीज में प्लेस करते हो, तो द corresponding value of the equivalent resistance or the total resistance also increases. It means here I have written the two expression. One is for the EMF and other is for the resistance. So here what you see, if you have the cells of EMF E1, E2, E3 up to En, then the total resistance will be equal to E1 plus E2 plus E3 up to plus En. And the corresponding total resistance will be what? The corresponding total resistance will be equal to R1 plus R2 plus R3 plus so on up to Rn. So it means when the cells are connected in series, then the total internal resistance will also increases. Now, this is a situation. In this situation, what you observe? In this fig, you observe that all the cells are not connected end to end. आपके तमाम सेल एंड टू एंड कनेक्ट नहीं हो रहे, क्योंकि क्या हो रहा है कि नेगेटिव, एक सेल का नेगेटिव दूसरी सेल के नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है और एक सेल का पॉजिटिव दूसरी सेल के पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है. इफ यू स्टार्ट फ्रॉम द राइट साइड, from here what you see, the positive terminal of the VS1 is connected with the positive terminal of VS2 and the negative terminal of VS2 is connected with the negative terminal of the VS3. Tell me, is there any current flow in this circuit? जी, आप मुझे ये बताएं कि क्या सर्किट में करंट फ्लो करेगा? नो सर. क्यों नहीं फ्लो करेगा? व्हाट इज द रीजन? उसका पाथ ही नहीं बन रहा सर. पॉजिटिव पॉजिटिव से मिला हुआ है, नेगेटिव नेगेटिव से. जी हाँ, उसका पाथ जो है वो नहीं बन रहा, इसलिए नो करंट विल बी फ्लो. लेकिन फर्ज करें, मैं ये कहता हूं कि आपकी एक सर्किट के अंदर दो सेल्स लगे हुए हैं, एक 6 वोल्ट का लगा हुआ है और एक 1.5 वोल्ट का लगा हुआ है, लेकिन वो दोनों इस अरेंजमेंट में लगे हुए कि एक का नेगेटिव दूसरी की नेगेटिव के साथ कनेक्ट है, तो क्या को करंट फ्लो करेगा? अगर आप दो सेल्स लें और उनको कॉपी पे बनाएं, उसका एक लेटर से एक सेल 6 वोल्ट का है और दूसरा सेल आपका 3 वोल्ट का है, तो क्या सर्किट में करंट फ्लो करेगी या नहीं करेगी? नहीं करेगी. देखिए करेगी. हैं, अगर सेल्स की स्ट्रेंथ एक जितनी है तो फिर तो करंट फ्लो नहीं करेगा. लेकिन अगर सेल्स की स्ट्रेंथ जो है वो डिफरेंट है,
बस मैं कह रहा हूँ कि एक सेल 6 वोल्ट का है, एक 3 वोल्ट का है, तो then the current will flow and this current is due to what? This current is due to the cells of higher strength. ज्यादा स्ट्रेंथ वाला जो सेल है उसकी वजह से आपका करंट जो है वो फ्लो करता है। ठीक है जी। तो ये आप आगे जाके जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करोगे तो उसमें देखेंगे कि किसी भी सर्किट में आपकी दो बैटरीज लगी हुई हैं, एक की स्ट्रेंथ कम है एक की स्ट्रेंथ ज्यादा है, लेकिन वो इस अरेंजमेंट में लगी हुई है कि एक का नेगेटिव दूसरी के नेगेटिव के साथ कनेक्टेड होगा। ये होगा नेक्स्ट वी हैव द सेल्स इन द पैरेलल अरेंजमेंट। सेल्स इन द पैरेलल अरेंजमेंट का मतलब ये हुआ कि वो अरेंजमेंट जिसमें सेल किसी भी तमाम सेल्स के एनोड्स आपस में और तमाम सेल्स की कैथोड आपस में कनेक्टेड हों। It means the positive terminals are connected together and the negative terminals are also connected together. So such a combination is known as what? That is known as the parallel connections. ठीक है, like here. अभी आप अब देखें, अगर आप पैरेलल्स को पैरेलली कनेक्ट करेंगे तो then the voltage will remain same about two terminals, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव पे आपकी वोल्टेज सेम होगी, लेकिन द करंट विल बी डिफरेंट। द रीजन दिस वन, क्योंकि करंट जो है वो डिफरेंट पाथ्स में मूव कर रहा होगा, तो इसलिए आपका करंट जो है वो डिफरेंट होगा। ठीक है, अच्छा जी। तो इफ EMF each cell is identical, then the EMF of the battery combined by a number of cells connected in parallel equal to the EMF of each cell. The resultant internal resistance of the, अब बताएं कि अगर सेल्स को आप पैरेलली कनेक्ट करते हैं तो उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी? G. Is the internal resistance increases or decreases? डिक्रीज करेगी। इंक्रीज करेगी, सीरीज में इंक्रीज करती है, इसमें इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपकी जो टोटल रेजिस्टेंस होगी that will be equal to the sum of the reciprocals of the individual resistances like this. This is the formula where 1 over R1 plus 1 over R2 up to 1 over Rn and whole power minus 1. It means this is the sum of the reciprocals. तो ये था आपका पहला टॉपिक। इसमें नाउ वी सी any question about the Ohm's law, chassis ground and the potential of a cell? कोई चीज इसमें पूछनी हो तो पूछ लें ताकि हम नेक्स्ट चैप्टर पे आर्टिकल पे जाएं। Any question? No, sir. ठीक हो गया जी। अच्छा जी, now we have the second topic of this course, that is the resistive circuits. सर्किट्स आप जानते हैं कि सर्किट्स हमारे पास दो तरह की होंगी। एक सर्किट के अंदर आपका डीसी सोर्स लगा होगा, जबकि दूसरे सर्किट्स के अंदर आपका एसी सोर्स होगा। ठीक है जी। तो here
First, we consider the resistive circuit in which there is a DC source. And you know the example of the DC source. The DC source कौन-कौन सी होती हैं? The cells and the batteries are the DC sources. फिर हम देखेंगे कि अगर किसी रेजिस्टिव सर्किट के अंदर बैटरी या सेल लगा हो तो उसका उस सर्किट को हम किस तरह एनालाइज करते हैं. What is meant by the analyzation? एनालाइज करने से मुराद ये है कि हम देखना चाहते हैं कि उस सर्किट में करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस की मेजरमेंट्स किस तरह की जाती हैं. तो here first we consider the resistive circuits. तीन तरह की सर्किट्स हमारे पास होंगी. Resistive circuits, capacitive circuits and inductive circuits. Capacitive circuits mean the circuits in which there is the capacitors only, or the inductive circuits mean the circuit in which there is the only inductors or coils. Okay? So first we consider the resistive circuits. Now, in any circuits, the resistances or resistors can be connected in two different ways. दो different तरीकों से आप इसको connect करोगे. हाँ जी, you will start the